esteemed panels include Rabia Mughni, who is our moderator for this panel. She is an integral part of Pakistan's lifestyle and entertainment journalism beat. Rabia Mughni is the founder and editor at Fuchsia Magazine, most known for her drama and film reviews, along with her thought-provoking and challenging stances on various topics of the entertainment industry. She is also known for her non-sensational yet entertaining talk show at Fuchsia Magazine. Nadeem Beg, a director, producer, and writer, who has proven to be a hitmaker. Nadeem Beg has been one of Pakistan's most celebrated names of the entertainment industry. Whether you love the Jawani Phir Nahi Aani series on the silver screen or a huge fan of cult classics like Mere Paas Tum Ho, Dil Lagi, and now Sinf-e-Ahan, you know you have Nadeem Beg for providing the best of entertainment that Pakistan has to offer. Next, we have Dure Fishan Salim, a new entrant into the industry who has become an overnight success. With a glittering career already created, Dure Fishan Salim has grasped the audiences through her strong talent and knack for acting. Completing her LLB from the University of London, she came to Karachi to pursue her dreams of being an actor and has been appreciated for her roles in dramas like Dilruba, Bharhas, and Pardes. And finally, Kubra Khan. A name who has proven her mettle time and again with her acting repertoire in a number of hit television dramas and films. Kubra Khan is a celebrated actor who doesn't shy away from taking hard-hitting roles, be it her debut into films with Jawani Phir Nahi Aani 2 or her recent mega hits on the small screen with Hum Kahan Ke Sacche The and Sinf-e-Ahan. And now over to you, Ms. Rabia. Thank you. Thank you. Hello. Can you all hear me? Assalamu alaikum. बहुत अच्छी क्लास की तरह आप लोगों ने सबने जवाब दिया है. Impressive. क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ये देख के अपने कॉलेज का ज़माना याद आ रहा है किस किस को? हम थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसे ही पहले क्वेश्चन से पहले करते हैं थोड़ी सी for to calm myself down, you know. हाँ जी, तो आपको याद आ रहा है ज़माना कॉलेज का अपना स्टूडेंट्स का? बिल्कुल आ रहा है. क्या पहली मेमोरी इधर देख के याद आती है आपको? बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत सालों पहले. You know, it is always good to see all, you know, youngsters who are studying filmmaking. And if you could contribute anything in their minds, life, it'll be great. दुरे आपके लिए तो काफ़ी recent है. You miss your college days? I don't actually. Don't? हाँ? क्यों भाई? Because I remember when I was in college, I was a very studious kid और मैं इतना पढ़ के भी A-levels में कोई इतने खास grades नहीं आए थे. तो मुझे कोई बात नहीं, हम सबकी कहानी है सादा जी, है ना? थिएटर ही कर लेती और A-levels में मैं law moods कर रही थी. मैंने कहा यार जो काम करना था वही कर लेती. तुम्हारा ग्रामाथन होता था लाहौर में. And I remember we used to all organize this और सब अपने आप को बड़ी चीजें समझते थे तब because you know we are getting all the celebrities and people on board. So I think it's fun to do all of these things and it's the best part of your life for sure. दुरे वैसे मैसेजेस आते हैं अब दोस्तों के यार तुम तो बड़ी चीज़ बन गई हो? नहीं मेरे अभी भी दोस्त वही हैं और मुझे वही समझते हैं. घर की मुर्गी दाल बराबर. So bad. अच्छा कुब्रा आप क्या हाल है? बहुत दूर बैठी हुई आप है ना? But ठीक है, it's okay. What about you? यहाँ सब लोगों को देख के स्टूडेंट जो लाइफ थी उसकी क्या चीज़ याद आती है पहले? Part of my studies, I had to do that. लेकिन हाँ कोई इस तरह याद नहीं आती मुझे to be really honest. I'm glad I'm out of it now. मैं कभी-कभी सो रही होती हूँ और मैं मुझे लगता है कि अभी एग्ज़ाम है और मैंने तैयारी नहीं की हुई. फिर मेरी आँख खुल जाती है, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ
कि मुझे ऑफिस जाना है और मुझे पेपर नहीं देना है, बिकॉज उस वक्त जो स्ट्रेस हो रहा था ना कि पेपर है और आपने तैयारी नहीं की, वो बहुत बुरा फीलिंग होती है. सो कमिंग टू आवर टॉपिक टुडे, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ड्रामास पर्टिकुलरली उसमें वुमेन जो रोल्स लिखे जा रहे हैं उसका नैरेटिव कैसे चेंज हुआ है. आर वी राइटिंग मोर एम्पावर्ड वुमेन कैरेक्टर्स, इज़ इट मेकिंग एन इम्पैक्ट, व्हाट हैज़ कॉज्ड इट, और आर वी इवन राइटिंग देम. तो मेरा पहला सवाल स्टार्ट करते हैं. आपको लग रहा है नदीम साहब कि चेंज हो गया है ये, हम ज़्यादा जो हमारे कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं फीमेल्स के वो वाकई एम्पावर्ड हैं? एक दो प्रोजेक्ट्स जो आ जाते हैं जैसे सिनफहान ले लें या इस तरह, उनको देख के क्या हम कह सकते हैं कि चेंज आ गया है जिस तरीके से हमारे यहाँ औरतों के रोल्स लिखे जा रहे हैं? आई थिंक चेंज इज़ अ प्रोसेस. ओके. इट डजंट कम ओवरनाइट. कुछ सोच में तब्दीली आनी शुरू हुई पूरी दुनिया में और वो तब्दीली यहाँ भी आई और पीपल स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली. मेरा ये ख्याल है कि एम्पावर्ड रोल जो ख़वातीन के ऊपर बेस करते हों और उनकी लाइफ के बारे में हो, वो हमेशा से लिखे गए हैं. इवन इन 80s, 70s, 60s जो ड्रामे हमें याद हैं. अगर हम एक तन्हाइयाँ की एग्जांपल ले लें, इन बच्चों ने तो नहीं देखा होगा वो ड्रामा, बट आई एम श्योर कुछ लोगों ने शायद देखा हो. तो वो ड्रामे थे जिसमें एम्पावर्ड लड़की नज़र आती थी. इवन हसीना मोइन जो लिखती थी वो हमेशा एक एम्पावर्ड लड़की लिखती थी. तो ऐसा नहीं है कि ये चेंज कोई अभी चूँकि इसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है या कुछ, तो अब हर दौर में लिखने वाले और बनाने वाले इस चीज़ को कहीं फील करते थे और हाईलाइट करते थे, और जब वो पब्लिक में जाती थी और वो बहुत बड़ी हिट होती थी तो उसका मतलब ये था कि लोग ये देखना चाहते हैं. बिल्कुल. So, आज भी कभी ऐसा कोई रोल जब आता है और वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हुआ होता है, बहुत क्लीशेड ना हो, तो लोग देखते हैं और उसको पसंद करते हैं. सो ख़वातीन, मैं ये कभी नहीं कहता कि अभी कुछ एम्पावरमेंट पे बात, दे हैव ऑलवेज बीन एम्पावर्ड. ओके. वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट नाउ. और अब शायद जिम्मेदारी ज़्यादा है. बिल्कुल. शायद ज़्यादा कॉन्शियसली एफर्ट करने की ज़रूरत है. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शुरू से किया जाता था. और आपने तन्हाइयाँ का अगर जिक्र किया है, जिन्होंने तन्हाइयाँ देखा हुआ है, सिर्फ दो मेन लीड्स नहीं बल्कि जो उनकी वो आनी थी, इवन शी वाज एन एम्पावर्ड वुमेन, यू नो, इतनी स्ट्रेंथ थी उनमें. तो सिर्फ एक बेसिक मेन लीड पे नहीं होता था, पूरा जो जितने भी रोल्स होते थे मेजॉरिटी ऑफ देम वर एम्पावर्ड कैरेक्टर्स. लेकिन बीच में डिप आया, अब फिर शायद हम पिक कर रहे हैं एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ. मेरा ख्याल है वो डिप नहीं है, वो एक फेज़ है जो अभी तक चल रहा है. क्योंकि डिप आप उस चीज़ को कहेंगे कि जो आप चीज़ बनाते हैं और लोग नहीं देखते. ये वो चीज़ें थी जो बनी जिसमें आपने हमेशा एक सबमिसिव साइड एक औरत की ज़िंदगी की, वो वाली उस चीज़ के ऊपर आपने कंसंट्रेट किया. लोगों ने उसको देखा, बहुत पसंद किया, तो लोग बनाते चले गए. बिकॉज इट्स ईजियर टू मेक दैट. जो लोग ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हैं. Yeah, it is difficult to write something which is substantial, which is giving power to certain characters, which is इसकी क्राफ्ट ज़रा सी मुश्किल होती है, इसलिए कम लोग हैं ऐसा लिखने वाले. उमैरा अहमद is one of those that she writes such characters. I want to move on, लेकिन आपकी बातों से मेरी चीज़ें निकलती जा रही हैं, तो इसका मतलब है फिर हम एम्पावर्ड रोल्स नहीं लिख रहे हैं. अगर मुश्किल है ये आर्ट है, नहीं मुश्किल नहीं है. इसके लिए आपका उसको फील करना और उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बिलीव नहीं करते और आप एक बहुत कंजर्वेटिव इन दैट सेंस कि आप नहीं बिलीव करते कि ख़वातीन सब कुछ कर सकती हैं. ओके. सो ऐसे शख्स के लिए लिखना और डायरेक्ट करना दोनों मुश्किल होगा और वो हमेशा शैलो दिखेगा, वो फोर्स्ड दिखेगा. लेकिन जहाँ पे कहीं ये फोर्स नहीं दिखता, वहाँ पे कहीं वो जो बिलीफ है इन दिस थिंग, वो होना बहुत ज़रूरी है. ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला. इस पर हम वापस आएंगे विद रेफरेंस टू द स्टूडेंट्स हियर, स्पेशली जो जर्नलिज्म के बैठे हुए. कुबरा, आपने स्टार्ट किया फ्रॉम दैट टाइम टू दिस नाउ, इतनी कॉन्वर्सेशन चेंज हो गई हैं. ड्रामों में भी कोई भी बात आती है जो हमारी जो कॉन्वर्सेशंस हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन राइट्स की, कुछ भी इधर उधर से एक शोर मच जाता है. तो जो रोल्स आपको पहले ऑफर हो रहे थे और जो रोल्स अब आपको ऑफर हो रहे हैं, आप क्या चेंज देख रही हैं
you know. And if you could give us 2-3 references or 2 references to make it more interesting for, or to make it for the students to understand it better, कि किस तरह से ये change आया है, because roles आपको offer हो रहे हैं. बिल्कुल. I think जब मैंने शुरू किया था, I think even then we had some great scripts that were happening. लेकिन Rabia, that's one thing that I've noticed कि normal क्या होता है? What's the norm, right? Norm is what is completely like, you know, effortless for anybody. और वो norm खुद ब खुद होता नहीं है, वो बनाया जाता है. I think over time what happened is कि हमारे जो producer, I'd actually like to thank our producers कि उन्होंने women empowerment के बारे में सिर्फ नहीं बल्कि और बहुत सारे topics हैं ऐसे जिसके बारे में बात करना शुरू की, और जो चीज़ पहले taboo होती थी या जिसके बारे में पहले बात नहीं की जाती थी, अब जाके it's very normal to talk about these things. So वो norm बनाना भी हमारा ही काम है. So I think one of the first जो ड्रामा मैंने किया था, which I felt कि जब मैं वो sign भी कर रही थी, which was मुकाबिल actually, तो वो in a way women empowerment के बारे में ही था, but also it was connected to a taboo topic, you know, about child abuse, and people never spoke about that before. So what happened जब मैं वो sign करने लगी थी, मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि तुम पे ठप्पा लग जाएगा, you know, rape victim का and this and that, and I was just like, well, somebody has to speak about it eventually, right? So I remember when I was doing that, मुझे बहुत रोक टोक दी गई थी, लेकिन उसके फौरन बाद there were so many things that started to happen similarly, क्योंकि it had so much impact on people. मुझे याद है कि जब उसकी पहली एपिसोड रिलीज हुई थी, तो मुझे उस ज़माने में खत आए थे. Yeah, and there were people who were owning up कि not just girls, लड़के as well, कि saying कि उनके चाचा, मामा, कारी, somebody had done something. So because we had given that topic to them on a table, it was up for discussion. Until we don't do that, it will never be up for discussion. Yeah. So similarly, I think with women empowerment as well, to give that, okay, like Nadeem Bhai said, women empowerment was never, you know, it was always there. It just nobody spoke about it. Ab jaake over time, I think, हमारी जो ख़वातीन producers भी हैं, उन्होंने भी they said okay, let's do it, and then obviously the men in the industry supported it as well. So I think कि unanimously आप एक effort लगाते हो, then it happens. So I think over time, like you said, it's a process. I agree, but वो process भी we have to make it happen. Otherwise, it won't happen. So I think it is our responsibility, चाहे हम चाहें ना चाहें, admit करें ना करें, as actors, as filmmakers, as the people of the media. Media does influence every single person dramatically. I mean, मैं सिर्फ करती हूँ, I get impacted by the work I do. So I can only imagine what, you know, everybody else does. So I think they have changed, and they've changed for the better. And I hope it continues. Yeah. Durafisha, आपको तो मुझे लगता है आपके साथ जितने लोग आए हैं, because you're relatively new in the industry, उन लोगों के पास तो बहुत pressure है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, किस किस्म का रोल लिया है, क्यों लिया है, कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, यू नो, लड़कियों को थप्पड़ क्यों लगा दिया, उसकी ये बात क्यों कर दी, आपको कितना प्रेशर फील होता है. एंड फ्रॉम योर फर्स्ट प्रोजेक्ट टू नाउ, वर दीज conversations a concern when you were choosing the script, that you need to portray the right image? So, to be honest, I've always thought that I'm here to act. Okay. मतलब ऐसा कुछ नहीं था, हम इतना सोच रहे हैं, philosophical बना रहे हैं. I am here to act. There's no pressure. Because to be honest, I will just choose a script that will touch here. And for that, it can be anything. And I also feel the point about a role being regressive, or जो हमने अब एक empowered woman का एक structure हमें लगता है that okay, this is going to be an empowered woman. I somehow disagree to that, because I have grown up around empowered women, be it the IRG in my school, or be it a single woman who's also teaching and all of that. So for me, the narrative that an empowered woman need to dress a certain way, need to talk a certain way, need to go to all the marches that is happening, is kind of regressive, because I feel like empowered women have always been here. And especially with me and the scripts I choose, I tend to just see that they need to connect to the audience at emotional level. And they need to resonate with me. They don't eventually have to be me, because that's the point, that I have to act and all. But I just want to play roles that resonate with the audience. It can be anything. और अगर थप्पड़ लग रहा है तो लोगों को लगता है थप्पड़, लेकिन किस वजह से लग रहा है, उसके पीछे क्या वजह, ये important है. So I also feel that we should just take a bit chill back seat and
give the entertainment industry a chance to just entertain you rather than always educate you, because what's the point of coming to schools if TV has to educate you all the time? ओके इंटरेस्टिंग पॉइंट, बट वील गो बैक टू नदीम साहब. आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली थी. आपने कहा था कि राइटर और डायरेक्टर जब तक खुद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि वुमेन नीड टू बी एम्पावर्ड और हैव टू बी बोल्ड और यू नो हैव टू बी इन सर्टन वे, वो उस तरह लिख नहीं सकते, वो उस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते. ऑल दी स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हुए कल, इनमें से इंशाल्लाह कुछ डायरेक्टर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट्स इस एंटरटेनमेंट में शामिल होंगे. उनको आप क्या एडवाइस देंगे? व्हाट वुड यू से दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड बी केयरफुल अबाउट इन देयर जर्नी टू मेक श्योर कि ये हमारी इंडस्ट्री में जब एंटर हों तो हमें वो माइंडसेट मिले जो हम देखना चाह रहे हैं? अच्छा, माइंडसेट्स को बहुत एफर्ट लगा के डेवलप नहीं होते. मेरा ख्याल है माइंडसेट्स डेवलप होते हैं आपके घर से, आपके पेरेंट्स से, आपके स्कूल से, आपके टीचर्स से. इफ़ यू आर लकी you have parents who are very responsible and they have raised you well, they have told you what the morals are. If you are lucky you will have teachers जिन्होंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ एहसास दिलाया हुआ है. Then when you enter this field, so ये सारी चीज़ें आपका एसेट बनती हैं. उसके बाद रह जाती है क्राफ्ट. क्राफ्ट आप लर्न कर लेते हैं जिसके लिए आप किसी स्कूल में आते हैं और वहाँ आपको सिखाया पढ़ाया जाता है कि लॉन्ग शॉट ये लेना है और क्लोज़अप ये होता है और इसकी ये रीज़न होती है. लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि मैं क्या सुनाना चाहता हूँ, वो कौन सी कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ. तो जब तक आपके जहन में कहानियाँ नहीं बनेंगी आप ज़रा मुश्किल से डायरेक्टर बनेंगे. और कहानियाँ बनती हैं वो बातें जो आप करना चाहते हैं, जिनमें एक एम्पावर्ड लड़की अगर आप सोचते हैं कि बहुत कम दिखती है टीवी पे और यू वांट टू मेक अ फिल्म और अ टीवी सीरियल ऑन अ गर्ल हु इज दिस इज हर जर्नी. सो दिस इज योर थॉट प्रोसेस. यू थॉट अबाउट इट एंड नाउ you want to produce it, direct it. I think this is what the director's job is, to think about a story and then learn the craft and then you will know how to put it through. Interesting. अच्छा, हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं कि वुमेन कि हम ये जो कैरेक्टर है अब हम एम्पावर्ड वुमेन का कैरेक्टर लिख रहे हैं, नैरेटिव चेंज हो रहा है. मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे ड्रामों में जो फीमेल लीड होगी वो आप दिखा देंगे कि वो बोल्ड है और यू नो या उसमें आपने करेज दिखाई है, वो थोड़ा सा चेंज है फ्रॉम द प्रीवियस ड्रामा हीरोइंस जो हम देख रहे हैं. लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने कैरेक्टर्स हैं स्पेशली फीमेल, हमें वो रिग्रेसिव नज़र आएंगे, हमें वो टॉक्सिक नज़र आएंगे. ये क्यों हो रहा है? क्या इस जस्ट बिकॉज वन कैरेक्टर को हम डिफरेंटली लिख रहे हैं हम कह सकते हैं कि हमारा नैरेटिव चेंज हो गया है? And I would like each one of you to answer because you are part of the project. आप लोग अपने point of view से बता सकते हैं. मेरा ख्याल है कि ये कहानी की एक स्क्रीन प्ले बनाने के लिए. पर नदीम साहब हर कहानी में ऐसा? हर कहानी आई थिंक सारी कहानियों में आपको डार्क, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे दिखाना पड़ता है. सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन जैसे तन्हाइयाँ की बात कर रहे थे हम, उसमें तो कितनी सिर्फ सनिया ज़ारा नहीं थी एम्पावर्ड, आनी भी थी, आनी के साथ और भी जो कैरेक्टर्स थे. लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत डार्क थी. दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज. दे हैड टू सेल देयर हाउस. शी हैड नोवेयर टू गो बट इवेंचुअली शी took a stand for herself and then she achieved what she wanted to. I think उसके अंदर भी जो फैक्टर थे वो कोई कैरेक्टर नहीं था, just losing parents था. So because she wanted to keep it light-hearted, she didn't want to make it an effort to create a character जो जुल्म ज़्यादती करेगा और उसके बाद ये दोनों लड़कियाँ कुछ करेंगी. So वो एक अपनी क्राफ्ट थी. हसीना मोइन की क्राफ्ट ऐसी हुआ करती थी, वो ज़्यादा लाइट-हार्टेड रखती थी. लेकिन अभी जिस तरह की क्राफ्ट चल रही है उसके अंदर आपको वो कैरेक्टर्स दिखाने पड़ते हैं जो कि आपको पुल डाउन करेंगे नीचे और आप उनसे स्ट्रगल करके बहुत आगे जाएंगे. आई थिंक दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टोरी एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज ऐसे किरदार हमारे इर्द गिर्द होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, Durfisha, would you like to say something? I just feel that our dramas, especially our Pakistani dramas, are a representation of our real life. तो हमारी अपनी ज़िंदगियों के अक्कासी होते हैं. तो
हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी there is not everybody positive around us, is it? No. So we have a bad puppo, we have a bad chachi. So if we are showing that, so I think we're representing the society, because at the end of the day you have to put down a story that is real, and for that it is important that you touch that ground. और वही ना नेकी दिखाने के लिए बद दिखाना ज़रूरी होता है. So you can't just say everybody is amazing, positive, vibrant. You have to show the layers of a human being, because to be honest, none of us are black or white, we're gray. So I think our dramas are doing a great job in showing the gray side and also layers. We're not just the positive, always never angry girl. There are girls who have anxiety. There are girls who suffer anger issues, but at the same end, they are empowered. They think that they want to do certain good to the society. They also have a soft corner for people. So, you know, the entire narrative that a positive person needs to be completely positive and can't have like an episode is something that I kind of diss for, because I feel like as a human, we all have layers, and that's what our drama shows. Kubra? So I have two different views, right? Interesting. सुन रहे हैं हम. एक ये है कि I feel like a lot of the dramas that we show, right? It's not always to tell you what to do. A lot of the times we show what not to do as well, right? Because of the outcome, a character, I mean, for example, if I've been an antagonist throughout, what would my outcome be? What would my end result be, right? So if I'm showing you something, even if I'm like, whether I'm an antagonist or I'm a protagonist, if I'm acting a certain way, that's not necessarily how you should act. It's about learning from the dark and the light, right? So I feel like it's not always कि आप ये करो. It's about आप ये ना भी करो, because ये end result होना है इस चीज़ का. So to answer your question, where you said कि wherever there's empowered women, everybody around her is, you know, toxic. I don't exactly agree with that, because I feel like, you know, like Durafishan said as well, कि everyone is not black or white. And if somebody claims to be, I don't buy it, to be really honest. Everybody has the gray shades in them. But at the same time, I feel like हमारे आसपास, there is always that one person even, or even if it's a kid, or some kind of positive influence as well, which keeps us going. And that goes the same for our dramas as well. So yes, there might be toxic people, but there will also be positive people as well. There might be horrible situations, but there will be positive situations as well. And at the same time, I feel like if you're growing through, if an empowered woman is growing through a positive scenario, you're not really learning anything, right? You have to go through hardship to actually come out and stand strong. And what we're trying to show is not the fact that everything's always going to be, you know, cream and cupcakes. It's, you are going to have your ups and downs. You are going to meet all kind of people. So it's important to show like variety of people. That's what I think. So I do think that, yes, the negative is there, but that's only to show that the woman can overcome anything. मुझे बड़ी अच्छी बात लगी. आई थिंक जो मैंने सम अप किया वो ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि जो बाकी हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं फॉर दैट मेन कैरेक्टर टू गेट वेयर वी वांट हर टू बी इन दैट वे. कुबरा एंड दुरफिशा, आप लोग एक्टर्स हैं, आप लोग को रोल्स ऑफर होते हैं, बहुत रोल्स आप लोग मना भी करते होंगे. अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आप प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को क्या 2-3 फीडबैक देना चाहेंगी इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स दैट यू वुड लाइक टू प्ले, या किस तरीके से हम इस नैरेटिव को ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, ऑफ शोइंग more a better version of women for our students, our youth to idealize or follow also. What sort of feedback would you give to the producers and directors? I mean, I think since that, you know, we've kind of restarted doing that again, I think we're doing a good job. But saying that, I think the one thing that we as women need to understand as well, that technically speaking, we don't need another person to empower us. We can do it ourselves, you know? Very good, yes. And we don't need, you know, somebody, a friend or a partner or anybody like that to come and tell us that you're empowered. If you have to be told you're empowered, then you're technically not empowered. हमारी स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें women do. So from writing and directing point of view, हमारी स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें you don't need to tell women के oh आपको empower कर रहे हैं हम लोग. Exactly. Right. I think that. I think everyone, be it women or men, both, everyone needs to know their And I think worth. it will be very refreshing अगर हम ऐसा कुछ देखें तो. Exactly, exactly. I feel like this comes from within, and the whole point is that even अगर आपको कोई दबा रहा है, how you rise from it. I mean, we need to be phoenixes. We need to rise from the ashes.
that what we need to do, and for that we don't need another person to tell us that. So अब second आपने दिया बहुत dramatic होना चाहिए, rise from the ashes, you know, emotional, लोग तालियां बजा रहे हैं और you know ये I'm inspired by Harry Potter. Okay, अदिति साहब सुन रहे हैं ना? Feedback. ऐसे भी देते रहते हैं. Exactly. काम कर रही है, दुर्विशान काम कर रही है. Duryusha cannot answer it right now in front of everyone. But I'll tell you something. I feel to show an empowered woman, we also need to start showing empowered men. We need to tell कि मर्द हमेशा बुरा नहीं होता, जो कि हम अपने ड्रामा में बहुत दिखाते हैं कि आदमी टॉक्सिक ही है. There are good men around us, and like, of course, and obviously, like, I am who I am because of my father, my parents, my brother around me. So there are men who kind of lift women too. So always showing the narrative that, can you hear me? Okay. Always showing the narrative that an empowered woman comes empowered because there's a bad man around and she's fighting through them and all of that is kind of something I think is draining. Yeah. So that one, and second, I think we need to show female and male friendships. Like, you guys can be friends without having a romantic angle, right? Get that? Like, my best friend is a male and he is getting married to another best friend of mine and there's nothing romantic between us and we can still be friends. So I think the entire angle of showing कि औरत और मर्द कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, I think वो हमें छोड़ देना चाहिए because हो सकते हैं. And third, Khalil Saab will be very upset with you. Okay, I can't talk about that. It's stigma child, I can't. गया आपका स्क्रिप्ट दुर्विशान, गया आपका चांस फ्यूचर का. It's okay. Third But by thing. third, I feel like we should also write stories about a character that is beyond age. मतलब हम 22, 24, 25, 26 के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. औरत और मर्द दोनों की 40s के बाद भी ज़िंदगी होती है और I think वही असल ज़िंदगी होती है. तो वो किरदार लिखना बहुत ज़रूरी है because हमारी काफ़ी ऑडियंस वो है और 22-23 की लड़की वो जो एक आता है ना हमारे पास स्क्रिप्ट पे बेसिक like I am 20, about to be 26 now, but I'm always playing 19-year-old in my scripts because 19 से ऊपर तो लड़की हो ही नहीं सकती. तो I think वो हमें छोड़ देना चाहिए. एक 30 साल की लड़की भी can be in love, 40-year-old romantic love story can happen too. But for that, it's very important that the audience tends to appreciate that because we need to realize that it's all about the money. अगर आप देखेंगे TRPs आएंगी, पैसा आएगा तो production would be willing to invest. It's, you know, the entire game revolves around money. So we can't just be producing stuff and not getting a good feedback Return on that. A return on that. So we need that. It's like a two-way angle kind of a thing, right? कुबरा आप कुछ कह रही हैं? जी मैं ये कहने वाली थी कि don't you think that we अब जाके चाहे but we are starting to make scripts that are targeting, you know, the elder audience or, you know, the elder characters. Lekin issues I feel like hum actors में भी है कि we don't want to do it because we don't want to look older than the age that we have. Yeah. I know I've done that. I'm 28 and turning 29. I've been offered a role where I have to play a mother and I'd think twice about it. Do I really want to be in that bracket? So I feel like us actors kind of have that issue as well, don't you think? I think the entire production houses and everything has made it a narrative that अगर आप माँ एक दफ़ा बन जाएंगी तो आप typecast हो जाएंगी उसमें. So I think that's why also we are scared. But for that we need to take a step ahead because I think one of the best ladies in our industry, the most empowered one, and I think fab actors are mothers, are single parents. So जब आप असल में भी single parent और माँ बन सकती हैं तो ड्रामा में क्यों नहीं बन सकती? Like we have stories like Dobara as well, you know, and that's doing really great. So I think slowly, but I think we have started to work on it. But yes, we have to increase the frequency of it, I think. Okay, Nadeem साहब, I would like to ask you, and for the, I hope यहाँ पे मुझे बताया गया था advertising, journalism and media से बहुत से students बैठे हुए हैं. उनके लिए ये interest हो सकता है. अगर आप लिख रहे हैं, अगर आप इस field में आना चाह रहे हैं और इस film making में या direction में, आपका character एक था अतीका ओडो का परदेस में. जब हम बात करते हैं कि हम एक empowered character लिखना चाह रहे हैं, उसमें हम कैसे balance करेंगे grey shades को उस character के without losing
the empowerment that we want to give to that character so that it doesn't go towards becoming a negative thing. जो अतिका ओडो का character था, it was अगर आप में से किसी ने देखा हुआ है? Okay. So yeah, so if you guys remember, हमें Everybody पसंद should आता watch per day. So मुझे याद है कि वो जो कैरेक्टर था, हमें थोड़े थोड़े मसले होते थे कि वो ये क्यों कर रही हैं, बट वी नेवर हेटेड हर एंड आई एडमायर्ड हर फॉर बीइंग अ सिंगल मदर जिसने अपने बेटे को रेस किया, एंड वो बड़ी बैलेंस थी, लेकिन देयर वाज ग्रेनेस इन दैट कैरेक्टर क्योंकि वो आप लोगों का प्रोजेक्ट था. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एंड फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, व्हाट वुड यू एडवाइस टू दीज स्टूडेंट्स जो इसमें जाना चाह रहे हैं कि अगर, या क्या आप शेयर कर सकते हैं इनसाइट कि कैसे बैलेंस करते हैं इस चीज़ को? ओके, सो यस, सो कैरेक्टर की ग्रेनेस है, ग्रे कैरेक्टर है जिसमें वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है, उसमें लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने वुमेन और ये एक औरत का कैरेक्टर है, उसमें आपने उसको एम्पावर भी करना है. जो दीगा उड़ो थी वो एज अ सिंगल मदर. एम्पावर करना का वर्ड मतलब ये आज टॉपिक ही ऐसा है तो मुझे बार बार यूज़ करना पड़ा है, सॉरी. अगर आपको ये प्रेशर है कि आपके पास ये 4 कैरेक्टर्स हैं ख़वातीन के, और उनको जो एक ड्रामे में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सिचुएशन में प्ले कर रहे हैं, और उनको आपको एम्पावर करना है. आई थिंक इट डजंट वर्क दैट वे. ओके, चलिए मैंने शायद गलत पूछ लिया. हर एक कैरेक्टर की एक अपनी जर्नी है. जो अतीका ओडो का कैरेक्टर था, वो एक खातून थी who got married to a man and who died early, and then she's raising a son, और फिर उसके स्टेप चिल्ड्रन भी हैं. बिल्कुल. सो वो जिस तरह से उसने स्ट्रगल की होगी और जिस तरह से उसने अपने बेटे की लाइफ को बेहतर बनाया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, उसके साथ फिर बैगेज आता है और वो आपको थोड़ा बेटर करता है और आपको इनसिक्योर करता है. सो आई थिंक इनसिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न which makes you do some wrong things that you don't realize at that time, but eventually you do. Okay. हाँ. क्या कुछ टिप शेयर कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए? मेरा ख्याल है कि बहुत डीप सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि ये किरदार है और इसके अंदर एक लड़की को एम्पावर दिखाने के लिए आपने कुछ यूँ करना है. ये कहानी हमेशा फोर्स्ड होगी और ये कहानी हमेशा शैलो होगी. जब आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बेशुमार कहानियाँ मिलेंगी. अगर वो कहानियाँ आपको इंस्पायर कर रही हैं तो फिर आपको कहानी भी मिल जाएगी और ये भी समझ आ जाएगी कि उस कहानी को कैसे लिखना और कैसे लेके चल रहा है. अगर वो कहानी आपको इंस्पायर नहीं कर रही और आपको ढूंढनी है एक कहानी जो कि किसी लड़की के बारे में हो और जो कि लोग एक्सेप्ट कर लें, तो फिर वो कहानी मत अटैम्प्ट करें. द कहानी हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, एंड it comes when you feel about things happening around you. Thank you. And ये आजकल जब मैं बात करती हूँ यंगस्टर्स से तो मुझे बहुत से लोग स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही हम किस डायरेक्शन में जाएं. मीडिया में भी है तो हमें क्लियरली नहीं पता कि हम इसमें क्या फील लें. टू बी मोर स्पेसिफिक, जैसे मीडिया में अगले मेजर किस में करें, अब ज्वाइन करना इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, लेकिन उसमें क्या करें? आप कुछ गाइड करेंगे कि हाउ कैन दैट हेल्प देम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से ये अपने करियर को थोड़ा फोकस करने की तरफ ले जा सकते हैं फॉर देम टू इट्स ईजियर टू चूज समथिंग? मेरा ख्याल है कि आप लोग डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर फोटोग्राफी, यही सब कुछ बनने के लिए इस यूनिवर्सिटी में आए होंगे. तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है दैट जब आप अपना थीसिस कंप्लीट करें, मेक समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर योर फाइनल थीसिस. एंड जितनी प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में या स्पेशली कराची में, आप उनको अप्रोच करें. बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी से भी कि उनको भी अपना कोई ऐसा डेस्क बनाना चाहिए जो कि कम्युनिकेशन, हमसे कोई कम्युनिकेट नहीं करता, किसी यूनिवर्सिटी से लोग नहीं आते. आई हैव पिक्ड कपल ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. वो भी आई वॉज सिटिंग विद समवन इन लाहौर. सजाद गुल साहब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और उनके पास 2 बच्चे बैठे हुए थे और वो दोनों NCA से थे जो कि फ़िल्म ग्रेजुएट थे, और उनसे वो एक मुझे स्क्रिप्ट सुना रहे थे. वो फिल्म तो मैंने नहीं की, लेकिन उनमें से एक को मैंने ऑफ़र किया टू कम एंड वर्क विद मी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड ही ऑप्टेड फॉर इट एंड ही केम एंड ही स्टार्टेड वर्किंग विद मी. और इट टुक हिम 4 years to assist me. Now he is directing his own serial. So I think this is the way
a journey should be. So मेरी एक open offer है यहाँ पे जो बच्चे करना चाहते हैं ये काम, we are going to assess you that आप में वो passion है या नहीं है, आप में वो समझ है या नहीं है. I'm not talking about, no one is going to ask you about what do you know about the cinematography or cuts or anything. It's just the passion that I want to see. We will assess you and we'll give you the chance. ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है भैया आप लोगों को, इसका फायदा उठाइए इमीडिएटली, ASAP. निकलने मत दीजिएगा इनको गेट से बाहर. इसमें मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो मेरा एसोसिएट था जिसको मैंने 4 साल तैयार किया था वो डायरेक्टर बन गया. आप मुसद्दिक की बात करें. मुसद्दिक की बात करें. हब्स अगर आप देख रहे हैं तो मुसद्दिक मलिक ने उसको डायरेक्ट किया है. हब्स ड्रामा चल रहा है और वो उसका पहला ड्रामा है. So it's in 4 years he's directing his own. It took me 20 years probably to. चलिए अल्लाह करे जो इनमें से कोई आए तो उसको 2 साल लगे, इतना नहीं लगे. Sure. ये आप सोच रहे हैं नहीं मुझे इतनी जल्दी नहीं एंटी को जाने देना. अब तो बहुत वक्त क्विकली तब्दील हो रहा है. अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. हमारे ज़माने में बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी. लेकिन बच्चों को मैं जिनसे मिलता हूँ उनको देख के लगता है कि उनको नहीं पता कहाँ जाना है. अब कॉलेज से निकल के किससे बात करनी है, किससे कहाँ मिलना है. So I think we have an HR department. You come and submit your resume and then we'll take it from there. आप कुछ कह रही हैं दुर्विशा? नहीं. अच्छा दुर्विशा कुबरा आप क्या कहेंगी यहाँ पे जो लड़कियाँ एक्टिंग की फील्ड को ज्वाइन करना चाह रही हैं? What are the few things that you would guide them about? अच्छा, so I actually had to answer this question once before as well, and जिन खातून ने मुझसे पूछा था कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, I want to be famous and I want to do this and that. So my only thing to them was कि हर चीज़ का एक वजह होती है, हर चीज़ की एक वजह होती है, and वो वजह फेमस होना या पैसे कमाना या something like that ज़रूरी नहीं है. Because I know when I started working, I didn't have passion for acting, right? But the moment I got passion for acting, I take every character as if it's actually me living the life. और आप में अगर जैसे नदीम भाई ने कहा कि चाहे वो scripts हैं, चाहे you becoming a director or whatever it is, you need to have the passion. So yeah, अगर आपको, if you have the passion to act and purely just act as an art form, that should be your first reason to get into the acting. अगर वो आपका solid है ना, तो I feel like everything else just falls into place. So having that honesty towards your art form is the most important thing. So if there's anybody here who wants to become an actor, I feel like before you go ahead with it, just go through the reasons why you want to do it, because fame is not guaranteed, money is not guaranteed, but one thing that is guaranteed is that if you do it honestly and genuinely, then that art form will be doubled and tripled and will actually create magic for the people around you. So, you know, I agree with what Durafisha said earlier, that sometimes we should just use this industry as an entertainment industry and not question everything. However, I do at the same time think that कुछ topics ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपको एहसास हो रहा है कि आपकी script या आपके understanding of your character की वजह से लोग impact हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ी sensitivity दिखाना ज़रूरी भी है. Whereas the entertainment industry comes in, I feel like there are so many other ways we can do it. Like, why don't we make stuff that is slightly surreal? Like, मैंने art पढ़ा हुआ है and motorsports, लेकिन with my art side, I was into surrealism. So there's always that one, you know, true story that's happening, but something odd would happen in it. You know, so why don't we work around that scenario so it won't be as sensitive for people to watch as well? You know, I think so at least, because it's how you treat it. So people who want to become an actor, whether it's girls or boys, for me, I think it's about whether you want to do it purely for entertainment and how much you love the art form instead of how lucrative it's going to be. I think that's more important. Durvisha, would you like to answer this? मैं different सवाल पूछ लूँ आपसे. I can give you 3 tips. Oh, that's good. As many as I know. But I just feel, one, so patience, and loads of patience if you think you can have that. And Marina ji once said me, initially when I was starting, very much starting 2 years back, said me that fame is the outcome of this job. What you do here is your actual test, and that is what will make you famous, will glide on all the money or not. So
when you're coming on a set, you have to make sure that you're not a star, no matter how big of a star you are, no matter whether you're a rising star or not, because वो जो आप सुबह 8 से रात 10 और कभी 12 बजे तक काम कर रहे हैं, that is what matters the most. वहाँ आप as a person जैसे होते हैं, हर इंसान के साथ आपका इखलाक जैसा होता है, I think वो आपको काम दिलाता है. I don't think so anybody can be an amazing actor from the very first drama or the second drama. You grow. This is the kind of job that you learn with experience. You're never a born actor. So you learn with every project. So I feel patience, persistent, and being consistent is the only tip I can give anybody. And just be humble. Don't think you are something, because your craft should be something you should not be. अगर हम देखें तो हमारे जो ड्रामा में स्टोरीज़ लिखी जा रही हैं, डेफिनेटली चेंज आया है जिस तरीके से हम औरतों के कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करें. इवन अगर मर्दों के कैरेक्टर्स को भी लें तो चेंज आया है. जैसे दुर्विशा, यू टॉक्ड अबाउट एम्पावर्ड मेन, कि हम उनको भी चेंज करें. एंड अगर हम देखें तो कुछ जगहों पे आया है स्टोरीज़ में, हम मर्दों को पॉजिटिव दिखा रहे हैं और बहुत जो हेल्प कर रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि स्टोरीज़ वही हैं. पहले बहू जो थी वो रोती धोती थी, तो अब शायद बहू थोड़ा सा स्टैंड लेने लगी है. हम लोग डिफरेंट स्टोरीज़ क्यों नहीं कर पा रहे? गैप कहाँ पे आ रहा है और वो गैप क्यों आ रहा है? मतलब हम एक जर्नलिस्ट की स्टोरी, एक पुलिस वुमेन की स्टोरी, या एक शेफ़ की स्टोरी क्यों नहीं बता पा रहे हैं? रियल स्टोरीज़ पे क्यों नहीं काम हो रहा है हमारे यहाँ? रियल हीरो, ये गैप क्यों है? आई थिंक हमारी डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि हमारे मुल्क में जो केबल चैनल है वो ज़्यादातर ख़वातीन देखती हैं, मर्द देखना चाहते हैं. और हम एक आध प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमें बहुत बड़ी मेल ऑडियंस मिली, लेकिन वो उसने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं की. वो एक सबने कहा कि ये एक वन ऑफ प्रोजेक्ट था जो इतना बड़ा हिट हो गया था. लेकिन ऑडियंसेस चूँकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं, और जो वो ज़्यादातर हाउसवाइफ्स और घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये सब पढ़ते होंगे, और इनका मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इनमें से बहुत सोने आजकल जो ड्रामे इस क्वार्टर में चल रहे हैं वो नहीं देखे होंगे. सो उसकी वजह यही है, ये यूट्यूब देखते होंगे, नेटफ्लिक्स देखते होंगे, और सो हमारी ऑडियंस जब चेंज होगी और जब आप रीच आउट करेंगे एक बड़ी ऑडियंस को, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी ऑडियंस अगर वो है तो आप उनके लिए वैसी ही चीज़ें बनाते रहें, वो भी डिफरेंट देखना चाहते हैं. लेकिन ये वाला चेंज लाना थोड़ा मुश्किल है, और इसका एक बहुत साइंटिफिक चेंज की ज़रूरत है, जिसमें ऑप्शन आप पैरेलल क्रिएट करते हैं. आप एक जो ऑप्शन है उसको चेंज नहीं करते. यानी एक टीवी को चेंज करने के बजाय यू क्रिएट अनदर ऑप्शन ऑफ डिजिटल टीवी, जिस पे आप हर तरह का कंटेंट डालें, और उसमें फिर आप हर तरह की ऑडियंस OTT वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो लेकिन अभी आपने जो मेंशन किए सारे बच्चे जो बैठे हैं, लेकिन अब तो हमारे ड्रामे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ना. अगर हम स्टोरीज ऐसी बनाएंगे तो शायद ये लोग भी देखना शुरू कर दें. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. तो वो कहानी क्या लग रहा है कि कम्युनिकेशन का गैप है, या एफर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं इतनी, और व्हाट नीड्स टू बी डन? क्योंकि OTT तो इतनी जल्दी होते हुए लग नहीं रहा है. अगर हो भी जाए, अभी मायरा खान का जो आया था 12वां खिलाड़ी, I don't think कि वो इतना ज़्यादा हो सका, because it was on an OTT platform and not many people bothered कि वो जाके वो करें. और तो it was a great project, it was a youth oriented project, but because वो OTT पे था, और हमारे यहाँ शायद एक लोकल OTT की अभी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं है, हम सब वो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन पे हैं. तो हम एज एन इंडस्ट्री, हम आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम यूथ को नहीं जाने दें, और हम जो गैप है इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स दैट वी आर राइटिंग, हम उसको एड्रेस कर सकें? बहुत बड़ी तादाद है यूथ की जो हमारा टीवी देखती है अभी भी जी. लेकिन सिंफिया खान ब्रॉट अ लॉट ऑफ पीपल उसमें टू द व्यूअरशिप. 12 साल के बच्चे और बच्चियां जो थे वो सिनफे खान देखते थे. बिल्कुल. और वो एक नई ऑडियंस थी जो क्रिएट हुई. यानी शायद अम्मी 50+ जो लोग हैं वो कुछ एपिसोड स्किप भी कर जाएं, और मेरे हम सफ़र कभी ना करें, सिनफे खान के कर जाएंगे. लेकिन वो जो उसी घर में 12 से 15 साल के लड़के और लड़कियां, 15 साल वाली भी मेरे हम सफ़र की एपिसोड मिस नहीं करेगी. गिवन दैट आई कैन गारंटी नाउ. नहीं देखा है तो देखें आप लोग जाके. सो ऑडियंस के पास चॉइस होनी चाहिए. Okay. और उनके लिए हर तरह का कंटेंट टीवी पे होना चाहिए.
आई कम्प्लीटली एग्री, हम बहुत लिमिटेड स्पेक्ट्रम देते हैं टीवी के ऊपर। एक तरह की कहानियाँ उनमें बहुत प्लस माइनस गुंजाइश होती है तब्दीली की। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसकी इकोनॉमिकल रीज़न है, चैनल्स की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, वो क्लाइंट हैं और हम चीज़ें बना के उनको देते हैं। उसमें हम बहुत कोशिश करके कुछ नई चीज़ करने की फिर भी कोशिश कर लेते हैं, और अब चैनल्स भी सोच रहे हैं कि वो कहानियों को तब्दील करें और वो उसकी एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है, या उम्मीद बिल्कुल पे दुनिया कायम है। Durvisha and Kubra, would you guys like to say anything on this? Actually, I think he summed it up pretty well, to Okay. be honest. I do think he summed it up pretty well. And, but I agree with the argument. वही argument हो गया कि अंडा पहले आया या मुर्गा। हाँ, कि ऑडियंस चेंज करेंगे या हम कह सकते हैं ऑडियंस डिटरमिन करेगी या हम डिटरमिन हाँ, करेंगे कि ऑडियंस क्या exactly. कहेगी। So somebody तो- has to take a step Yeah, first. And, but I do feel कि maybe it's like a 60-40 ratio कि if we make it, they'll see it. But then again, we'll be like, we're making it, are they watching it? So it's the same argument. Yeah, I सिंफ think फरहान काफी लोगों ने देख लिया ना। Yeah, that's Maybe an example. बट But it was like one-off. काम ऐसा है जिसमें साइंस नहीं चलती। इट्स क्रिएटिव, Yes, इट इज़ अ true. क्रिएटिव It's a जॉब। creative job. सो इसमें कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है और करते रहना, एवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। Durvisha and Kubra, for you guys, my question is, जो हम ये सारी बात करें चेंज की, and इसमें एक्टर्स के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ बड़ी एक्टर्स का नाम लें तो हमें पता है कि वो सर्टेन टाइप के रोल्स नहीं करेंगी, तो they are kind of maneuvering, like Kubra, for you also I might say, you know, I would expect कि हम नहीं देखेंगे कुब्रा को बहुत ज़्यादा इस तरह के रोल में, तो लेकिन हर एक्टर तो मना नहीं कर सकता ना, तो ये बैलेंस कहाँ पे करें? What would you say, and how much responsibility do you think it comes on actors कि वो इंडस्ट्री के नैरेटिव को चेंज करने में अपना रोल प्ले करें? In all honesty, I speak only on my behalf and nobody else, because मेरे लिए बहुत important है ये। I as an actor, या तो मैं बिल्कुल ही you know off script करूँ जिसमें कुछ भी सच्चाई ना हो, but if I am working on something that is related to or could relate to somebody in reality, then I do think it is my responsibility to show it in a way that either you say कि इस तरह का नहीं बनना, or ऐसा you can do it. Like for example, Mashal from Hum Kahan Ke Sache The, she was an antagonist, but I mean, I'd like to say that, you know, we as a team worked together to humanize her as much as we could. We had And sympathies for her. Thank you. But I do feel like, you know, it's important and it is our responsibility. But again, speaking on my behalf, that be it Mahajbeen, be it Mashal, be it Shehrzad, मुझे लगता है क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि people do get influenced by whatever that we show on TV. So I do think choosing the scripts wisely is very important. Empathizing with the character is very important. अगर आप empathize नहीं करोगे character के साथ तो फिर आप उसको उस तरह से implement भी नहीं कर सकते. I think that's very important. So for me, it's all right. So for me, it is very important to take responsibility of what I show, because like I said, हम चाहे ना चाहे, there are little girls, there are boys who are watching everything we do, you know, and it does put a lot of pressure, I'm not going to lie, but it's a kind of pressure you can take. But again, if you want to do it purely for entertainment, then we should do scripts that are not related to reality. You know, which I really hope that one day we can do. Yeah. Like we have so much cool stuff on, you know, Netflix or Amazon, which is completely like bonkers. Lekin at the same time, I'm British, I'm like using all weird terminologies now. So bilkul out of the box and koi reality nahi hai usme, but we I like the way you change bonkers se out of the box. Nice, nice. I think everything should be entertaining. कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं, जब आप उसको एंटरटेनमेंट में पैकेज करते हैं, यही क्राफ्ट है, यही लर्न करना है आप लोगों ने यहाँ पे। जो बात आप कहना चाहते हैं उसको कितनी एंटरटेनिंग तरीके से कहें कि लोग देखें और तभी पहुंचेगी उन तक। Durvisha, you want to add something? I feel, again, I'm not going to speak specifically for myself, but I feel most of the girls who come into this industry don't have the privilege to say no. Because when you're talking about no, you're talking about a privilege. I have that privilege. If 6 scripts come to me, I can say no to maybe all of them and wait for a better one. But there are
many girls who are running their households. So I'm not going to put this burden on them that everybody should have that responsibility, because I do humanize it on a level that not everybody can afford to have that responsibility. So when it comes to me, I have been privileged from day one that I have tried choosing my scripts. I have tried and putting forward narratives that I feel might influence some women, and but I also feel as a new actor, initially I didn't had much options, and because of the actor banne craze, I just went on doing what I thought I should do. But again, I have been very lucky and fortunate that whatever scripts came my way were very empowering. Like when Pardes came, I remember walking into the office and they said, "Ki tum ye kar rahi ho, karogi?" So I was like, "Kaun direct kar rahe hain?" And they're like, "Marina ji." I was like, "Okay." I didn't even read the script, but they just gave me an overview of kya script hai, kya nahi. So आपको I think वो एक trust भी होना चाहिए अपनी production house पे, because if you have that sort of camaraderie कि उन्होंने आपको हमेशा अच्छा काम दिया है, आप वो अच्छा काम करते हैं, तो वो ट्रस्ट होना चाहिए. तो वही कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई फील लाइक प्रिविलेज ना कहने का बहुत कम लोगों में होता है, तो सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार इट्स एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंटरटेन हो. तिरफिशा कह रही है क्यों इतने सीरियस और वो वाले सवाल पूछो, एंटरटेन करने के लिए बैठे, क्या करूँ यार, टॉपिक यही है तो उसी में बात करेंगे ना हम. लास्ट क्वेश्चन टू रैप इट अप, इन आर, जैसे आपने बोला ये चेंज है जो हो रहा है इंडस्ट्री में, क्या हम इस बात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस चेंज कहीं हम बहुत ज़्यादा स्टेरियोटाइप तो नहीं कर रहे हैं एम्पावर्ड वुमेन को? ये एक आपको लग रहा है या ये कंसर्न होना चाहिए कि वी कांट अलाउ देम टू बी वल्नरेबल, वी कांट अलाउ देम टू बी नॉर्मल और ह्यूमन, व्हाट वुड यू से? या स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए, और अगर आप बट ये रिस्क है, हो सकता है ना? हो सकता है, कोई भी चीज़ स्टीरियोटाइप हो सकती है. सास बहू भी स्टीरियोटाइप हो चुका है, और सास बहू बहुत अच्छा भी हो सकता है. सो इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू आर डूइंग इट, आपकी क्राफ्ट क्या है. फॉर एग्जांपल इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. 4 साल पहले बनाई थी पंजाब नहीं जाऊंगी, और पंजाब नहीं जाऊंगी बहुत बड़ी हिट हुई, और उसके अंदर भी आई ऑलवेज थॉट दैट वी शुड टेल समथिंग. महविश वॉज एन एम्पावर्ड गर्ल जिसने वो चेंज लाने की कोशिश की. थप्पड़ पे ना आइएगा. I was controlling. I was like, okay, I really controlled myself, but he read my eyes. I can have a session with you on that thappad. We should because have that session. that is a reality. वो भी होता है हमारे इर्द गिर्द. जब तक आप वो दिखाएंगे नहीं, वो empowered नहीं होती ना. कैसे पता चलेगा कि क्योंकि आपको मर्दों को भी चेंज करना है ना, कि उनको कैसे डिफरेंट होना है. अच्छा, तो उसमें भी कुछ ऐसा था दैट यू नो वो एक पूरी डेयरी को रीवैम्प करती है और उसको रन करती है और बहुत सक्सेसफुली करती है. दिस टाइम व्हेन वी आर डूइंग लंदन नहीं जाऊंगा, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद पंजाब नहीं जाऊंगी कि ये फिल्म आ रही है. सो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर दैट वे, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिट एंड फ्लॉप और एनीथिंग, कि इसमें आप ऐसा क्या बताना चाहते हैं जो कि इस तरह की बात हो जो कि लोगों को अच्छी लगे, और आप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो उसको पूरा भी करें. तो मेरा ख्याल है कि ये फिल्म एक थोड़ा सरप्राइज होगी दैट वे, जो कि खलील साहब के इमेज को भी बहुत बेहतर करेगी. और we hope so. and it will have entertainment also. So I'm just saying you have to entertain people at the same time. Yes, you can't be preachy. No, you can't be. Yeah, definitely. आप दोनों कुछ ऐड करना चाहेंगी? Okay. So और Kubra looked really good in London नहीं जाऊंगा. And she did it really well. we will take some questions. अगर आप में से किसी के questions हैं तो please feel free to ask. Assalamu alaikum, my name is Kinza and I am a huge fan of Mr. Nadeem Baig since your drama Lady Spark and Manjali. So my question is that you are one of those directors जो कि film के medium पे भी और TV के medium पे भी equally successful हैं, जबकि दोनों का treatment different होता है. So what's the recipe behind this success? Recipe share करें. It took me many years to create this recipe. इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा.
No, there's no recipe actually, to be honest. Um, honest, I think that is the recipe. If you love that story and you know the craft. Now, ये you know the craft है ना, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, जिसमें आप एक certain confidence gain करते हैं कि ये सीन मुझे यूं करना है और you know it. So there is no recipe. पहली फिल्म भी जब मैं बना रहा था, मुझे ये ज़रूर होता था कि ये एक छोटी स्क्रीन पे नहीं है, एक बड़ी स्क्रीन पे है. सो उसका विजुअल और उसका कैमरा और लेंस की चॉइस आपकी थोड़ी सी डिफरेंट है. बाकी कोई और प्रेशर नहीं होता. आपकी फिल्म और आपका सीरियल दोनों ऑनेस्ट होने चाहिए. हमारी ऑडियंस बहुत जेनरस है और मैं नहीं समझता कि वो बेवकूफ़ हैं किसी भी तरह से. आप एक अच्छी चीज़ करेंगे, वो उसको मिस नहीं करते, और आप कोई चीज़ में कोई कमी होगी, उनको पसंद नहीं आएगी, आप उनको ज़बरदस्ती नहीं ला सकते. थैंक यू. कोई और सवाल? I have a question for Kubra and Mr. Nadeem Beg. First of all, I loved Sinfayan, so congratulations. I think after a long time, people were glued to their TV screens, also on the YouTube screen, so I think it worked both ways. It was a very, for me, seeing those 5 girls, including you, going on this journey, which I think a lot of girls don't think of getting into the army. So I want to know from you, as a director, what motivated you to take this project? And Kubra, for you, what motivated you to take this character? Because I know there was a lot of physical exercise. If you could also tell us a little bit about the training, because I know you went through rigorous training for this role. So, yeah. I think it was an instant yes. बहुत कम ऐसे स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं जो कि 5 लड़कियों की जर्नी है और उनमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बहुत रियलिटी में दिखते हैं. And very well crafted script. So it was an instant yes. I think I always wanted to do something जो कि ज़रा मुख्तलिफ हो, run of the mill ना हो, और उसके अंदर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हम बहुत कम करते हैं. So that was one of the reason. It was tough to shoot, लेकिन ये मेरे लिए बहुत आसान था शूट करना, क्योंकि जितनी सख्ती थी वो इन 6-7 लड़कियों ने बर्दाश्त की थी. Because of their hard work, it looked the way it looked, and everyone liked. So, I'm going to go slightly on a backstory. Jab ye drama, I think when you guys were in process of it, I remember I had gone through this medical thing, so I had gained like a bunch of weight. So, jab mujhe pata chala kisi casting ho rahi hai, I was like, yup, I know I'm not going to be a part of it because I'm heavier, right? But then this one fine day came when this gentleman came over to me to give me easy. Funny enough, he came to give me easy and he mentioned कि मैं सिंफयान बना रहा हूँ, and we've done the casting for most of the girls, but there's one character. He told me about the character. I fell in love with it. Funny, it wasn't the character I ended up playing actually. उसके अगले दिन the producer messaged me, Sana Shahnawaz, and she's like, so Nadeem bhai had spoken to you, and would you be interested in being a part of Sinfayan? And obviously, it's not a script जो रोज आती है आपके पास. You know, being patriotic and the physical activities that we had to do and the amount of effort, mental, physical, emotional training we had to go through, it was rigorous, you know. So I was like, yeah, sure, I'd love to do it. I need to figure out how to use the damn thing. So I was like, I would love to do it, but she's like, so, Mahajibeen ke liye, we'll send you the synopsis. And I was like, Mahajibeen? Like, I was supposed to be Sidra. I offered her some other character at that time. Yeah, exactly. And Mahajibeen is supposed to be this girl who's like, pampered, not pampered, but like she's privileged in many ways, and she's stylish and all that stuff. And I was like, I don't think that's gonna happen. But then that's the thing. I think that's the beauty of our work. It makes you do things that you would never imagine doing, And just as he went on, I think you can see the gradual physical transformation in me as well, because I had lost my mind. I was like, that's it, I have to, kind of fit into the role, even if it's gradually. And this gentleman here was nothing but a delight, because
every second day, I would come to him and I'd be like, "Theek kar rahi hu. I don't know if I'm doing it right." And he'd be like, "Bro, you're doing fine. Just let it be." And I didn't believe it until I saw it on screen. And honestly, I think the amount of hard work that goes into this job, and this is not just for actors, but anybody, like be it producers, be it script writers, be it people who want to work, like be it directors. I think anything would take that passion and hard work, right? And persistency as well. But it's the passion at the end of the day that makes you do all that thing. So if you have that passion, just go for it like nobody's watching you. And I think that's exactly what we do on a daily basis, and that's why I guess people like it as well, kind of. Any more questions? Otherwise, हम इसको session को wrap up करते हैं. Oh, you have one. ठीक है, आप जी. I have a question for Kubra Khan. When you're going through scripts, so are there any specific red flags that you look out for? कि मैं ये script नहीं करूँगी अगर इसमें ये चीज़ होगी. You know what? Yes, I'm not gonna lie. Yes, होते हैं red flags, and for me, yes, of course, it's the entertainment industry. But I speak for myself, not for anybody. I'm not gonna put any responsibility on anybody else. But for me, I do take it upon myself that it is my responsibility simply because of the outcome that I have seen. तो मैं नहीं चाहूँगी कोई भी ऐसा मैसेज दिया जाए, चाहे वो मेरा कैरेक्टर, स्पेसिफिकली मेरा कैरेक्टर, कोई भी ऐसा मैसेज दिया जाए जो मैं नहीं चाहूँगी कि सोसाइटी में चेंज हो. I mean, I would never want a change to be a regression. I would always want it to be a progression, obviously. But so ये चीज़ें हैं कि मेरा कैरेक्टर किस तरह behave करता है, कैसे नहीं करता. Like I said, even if I'm being an antagonist, as long as you learn from it, I'm happy with it. So I guess for me, the things that I look for is how much do I learn from my character, what impact it has on my life. Because if it has it on my life, I feel like we're all pretty much, plus minus same people. So I feel like if I can learn from it, if I can implement something in my life, I would go for it. So yeah, I do have these things where it needs to be impactful. My character needs to, and I don't, another thing जो आपने पूछा था कि जो हमारी actors हैं वो क्या करना चाहते, उनको क्या करना चाहिए. मेरे लिए एक चीज़ है कि मैं आज तक मैं supporting cast भी करती हूँ. I do small roles as well, I do big roles as well. Honestly, that doesn't make a difference. So if you are starting off, इस चीज़ पे ना जाएगा कि अगर आपको पहले एक leading role मिल गया और अगले ड्रामे में आपको कोई supporting cast मिल गया. Honestly, the screen time does not make any difference. It's the impact your character has on the script, on the people. So just focus on that thing. So I think that's what I do. Thank you so much for your time, all of you guys, and इसके साथ ही हम सेशन खत्म करते हैं.